Hello and welcome back everyone to our new SSB lecture series. So far we have completed psychological test successfully. Soon I will be posting the notes of the psychological test in our group. And today we are going to start with the group testing officer, that is GTO. As we know that after the screening, there are 3 tests happen in the SSB interview. Those tests are psychological test, group testing, psychological test, group testing, and personal interview. So far we have completed TAT, VAT, SRT, SDT, and also about phase 1, that is PPDT, right? Sorry for the bad writing. And from today, we are going to start the GTO series, that is group testing series. And after the completion of this series, we are going to finish with the personal interview. Okay, so I hope everybody joined here properly, and we will begin with our lecture. So in the group testing, see, as we have successfully seen in the first lecture, good morning Tejveer, in the first lecture, we come to know that there are 3 aspects of SSB interview: Manasa, right? Vacha and Karmana, right? Manasa is done by psychological test. It is assessed by psychological test. Karmana is, however, is going to get assessed by the group testing officer. And the Vacha, that is how you speak, is going to get assessed by the interviewing officer. So far we have completed the Manasa series. Now we are going to see the Karmana series. In the group testing, actually it is the group testing. That's why every test occur in the group testing series is going to happen with the group. Okay. So after your psychological test, as suppose that there are 40 candidates get screened in, the 10 group of 10 will be made and 4 groups will be made, and each group will be assessed by the particular GTO sir. Understand? So for your group, there will be one GTO allotted to you. He or she is very experienced person, and the judgments of that person never goes wrong, as they have assessed thousands of candidates so far. So always consider their views about you are right. Understand? So in the group testing, there are very important tests, that is group discussion, group planning exercise, progressive group task, half group task, group obstacle race, lecturate, individual obstacle, command task, and final group task. Here I want to tell you one thing, that the first 4 tests are the preliminary test of the group testing, and I will say, in my opinion, are the most important test of the are the most important test for the group testing. You have to perform your the best in the first 4 tests, because most of your personalities are assessed in the first 4 tests, and remaining tests are the secondary and confirmatory test. That's why perform best in the group discussion, group planning exercise, progressive group task, and group obstacle race. Half group task occurs after the group obstacle race. Understand? Group testing is a very important task, because real-time problems are given in front of you and you have to find the real-time situations, right? What exactly the GTO sir does? He or she engage you in certain activity and observe you from the outside, and then from that outside, he or she observe, assess the officer-like qualities are present into you or not. Understand? So ये क्या करते हैं आपके साथ? आपको किसी टेस्ट में इन्वॉल्व करेंगे, then they will sit outside and observe you. Understand? So that is why group testing is also one of the important tests of the SSB interview. So I hope you understand this, and with this we will begin with the first test of the group testing, that is the group discussion. So everybody is with me. Only 9 candidates have so far registered for today's lecture, but okay, we will go with them. Fine. So what are the expected traits in the group discussion? What exactly is expected from the group discussion? Then your leadership skill. Do you have that leadership skill? Team working skill. Are you really working in the team? Very important is communication skill. Do you really speak your mind? And if you have the points, can you speak properly? Reasoning ability. Do you really reason whatever the topic in front of you properly? And then are you properly analyze that topic, that whether that information is necessary at that point or not?
लॉजिकल एंड कोहेरेंट थिंकिंग। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन में आप आ रहे हो और सिर्फ बोल रहे हो कि लेट चेस नंबर 4 गिव द चांस, लेट चेस नंबर 5 गिव द चांस। डोंट बी, वी डोंट हैव टू बी मॉडरेटर हियर। आर यू अ लॉजिकल एंड कोहेरेंट थिंकर? That is what is expected in the group discussion, right? Next is adaptability and flexibility. What is the meaning of adaptability? You are performing in the group discussion, so it is the group which you are together, with which you are together, and आप खुद के ही सिर्फ नहीं चला सकते हो यहाँ पे, right? You are performing in the group, so are you adaptable and flexible enough in with your group? That is what expected, right? Positive mental outlook. You should have that positive mental outlook towards every subject given to you. Liveliness and cheerfulness. चेहरे पे ऐसी रौनक होनी चाहिए, जब बात कर रहे हो तो आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आग होनी चाहिए आपके आंखों में. You should have that confidence into you, right? Assertive body language means what? Positive and proactive body language and projection of a distinctive likable personality. What is meant by likable personality here? That is personality having officer like qualities. So these are the expected traits from any group discussion, and mostly from SSB, from expected traits which are to be shown by the candidates in order to get good chance to get recommended. Okay, so let's see how it is assessed. चलो, the assessment baseline for group discussion is as follow. तो सबसे पहले आपका knowledge check होता है, right? So knowledge में क्या check होगा? आपके knowledge की depth कितनी है? What is the meaning of depth? If there is an issue in front of you, for example, COVID-19 is the issue. If you are speaking about the COVID-19, how much in the depth do you know about COVID-19? You just know about the virus. You should know more about the type of virus, mutation, vaccination, why vaccination is necessary. What is your range of knowledge for the particular topic? Can you think in the comprehensive way about that particular knowledge? Next is, do you have that logical thinking? ऑफ कोर्स आपके पास नॉलेज होगा, बट वो नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक का यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है. दैट इज व्हाट लॉजिकल थिंकिंग. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया. यस, काफी आइडियाज है आपके पास, बहुत सारे पॉइंट्स है आपके पास, बट आर यू रियली एबल टू ऑर्गेनाइज इट? आर यू रियली एबल टू प्रेजेंट देम? दैट्स व्हाट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डिस्प्ले योर नॉलेज. एंड फाइनली ओवरऑल इंप्रेशन. तो इन सब का मिलके एक ओवरऑल इंप्रेशन तैयार हो जाता है. ओके, सो नॉलेज इज द फर्स्ट थिंग. Second thing is expression of personality. चलो नॉलेज आ गया, सब आ गया. What is your personality? तो टेम्परामेंट. What is the meaning of temperament? उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन में आप खुद को संभाल रहे हो, नहीं संभाल रहे हो. एंड योर टोन एंड वॉइस, राइट? you should have that tone, you should have that strong, firm, confident voice. या फिर पॉइंट बहुत अच्छा है और आपका टोन एकदम छोटा सा टोन है, आपको nobody will notice you, right? Gesture, body language, sitting straight, you know, सामने देखना है, सबके आंखों में देखना है और आपके पॉइंट प्रॉपरली अच्छे से बॉडी लैंग्वेज में बोलना है. दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, राइट? मेंटल स्टेट, आपकी मेंटल स्टेट, प्रेजेंस वहां पे होना चाहिए. यू शुड बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट. एंड फाइनली दिस मेक्स एन ओवरऑल इंप्रेशन. अंडरस्टैंड? चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल. दिस इज ऑल्सो व्हाट इज चेक्ड. सो यू शुड बी अ वेरी एक्टिव लिसनर, राइट? यू शुड हैव द फ्लुएंसी ऑफ द लैंग्वेज. अगर आपके पास फ्लुएंसी लैंग्वेज की नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो उसके ऊपर रोते नहीं बैठना है आपको. यू हैव टू वर्क ऑन दैट. अंडरस्टैंड? यू हैव टू वर्क ऑन दैट. यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होगा. अगर नहीं होगी इंग्लिश अच्छी तो करो ना अच्छी. अंडरस्टैंड? सो यू शुड हैव दैट फ्लुएंसी. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज चॉइस ऑफ वर्ड्स. ये एसएसबी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स. एंड कैंडिडेट, some of my students who got recommended now, they told me that sir, we got recommended just because of newspaper and our vocabulary. Understand? They have very good approach with the newspaper. They used to read newspaper every day and they have very good vocabulary. So you should have that good choice of words. क्लियरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन. आप जो बोलते हो अच्छे से क्लियरली प्रोनाउंस करो. फॉर दिस मैं हमेशा बोलता हूं मेरे स्टूडेंट्स को, आई विल टेल यू ऑल्सो दैट टेक आर्टिकल ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एंड आधा घंटा जोर जोर से लाउड रीडिंग एक एक वर्ड करके पढ़ो. आपकी प्रोनाउंसिएशन इतनी जबरदस्त हो जाएगी, आपके प्रोनाउंसिएशन को चैलेंज नहीं रहेगा. यू बिलीव मी. ओके, एंड फाइनली ये सब मिला के आता है ओवरऑल इंप्रेशन.
and then your leadership skills are checked. So knowledge is done, expression, communication skill, and leadership. So how leadership is checked? Your initiative, how you initiate the GD, your team spirit, how you cope up with the team, and how you take the discussion as a group discussion. Understand? योर कॉन्फिडेंस लेवल, आपको आपके पॉइंट में कितना कॉन्फिडेंस है. हाँ, ये कॉन्फिडेंस शुड कम फ्रॉम दिस नॉलेज. ऐसा नहीं है कि बस कुछ नहीं आ रहा है और बस आप बोल रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है. यू शुड हैव दैट नॉलेज, देन ओनली योर कॉन्फिडेंट विल हैव दैट वैल्यू. नेक्स्ट इज एंड्योरेंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. आप कॉन्फ्लिक्ट को कितना समझते हो, आप कॉन्फ्लिक्ट को इतना बर्दाश्त करते हो, या फिर ऐसा नहीं है कि आपके अपोज में पॉइंट बोल दिया और गुस्सा हो गया. राइट, ये दिख जाता है, आपके चेहरे पे दिख जाता है गुस्सा. ओके, यू शुड नॉट डू दैट. कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल, दैट इज अनदर थिंग. अगर ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यू शुड हैव दैट रिजोल्यूशन स्किल. कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते आना चाहिए आपको. डिसीजन मेकिंग, एट व्हाट पॉइंट, विच पॉइंट you should put into the group discussion, and this comes with the overall impression. So I hope I am making this point clear that what is actually is seen in the assessment of GD. Knowledge check होगा, personality का expression check होगा, communication skill check होगी, and then इस सब को मिला के जो बनेगा वो रहेगा आपका leadership का quality. Understand? चलो, we'll go for the next point. So considering the above factor, list of positive traits, some of the negative traits according to assessment baseline for a group discussion. Right? तो आपकी नेगेटिविटी क्या हो सकती है? यू शुड आपके अंदर नेगेटिव डेप्थ अच्छी नहीं है आपकी. आप प्रॉपर रेंज में बात नहीं कर पा रहे हो. आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अगर उतनी अच्छी नहीं है, आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो थॉट, आप में आपके थॉट्स में उतना कोऑर्डिनेशन नहीं है. अंडरस्टैंड? सो एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी में आपके क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ट्रेट्स कौन से होने चाहिए? ओके, सो आई एम सॉरी, दीज वर द नेगेटिव ट्रेट्स. सो ये आप में, ये चीजें अगर आप में नहीं है, देन इट गोज इनटू योर नेगेटिव पॉइंट्स. सो ये चीजें आप में होनी चाहिए. सो एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी में क्या आता है? एंथुसियाज्म आना चाहिए. क्यूरियोसिटी से आपने सामने वाले की बात सुननी चाहिए. कीननेस एंड क्यूरियोसिटी. यू शुड हैव वेरी गुड पार्टिसिपेशन इन दैट ग्रुप डिस्कशन. राइट? चीयरफुलनेस, चीयर, आपको उस इंटरेस्ट लो, उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. राइट? स्मार्टनेस, कौन से वक्त में कौन सा पॉइंट बोलना है, दैट शुड बी अ स्मार्ट डिसीजन. राइट? कम्युनिकेशन स्किल में क्या चीजें अच्छी होनी चाहिए? यू शुड हैव द क्लियरिटी. ओके, फेलिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ज्यादा क्लियर आपके एक्सप्रेशन होने चाहिए. ओके, कैटेगोरिकल कंक्लूजन, प्रॉपर कंक्लूड आपको करते आना चाहिए. ग्रुप डिस्कशन, चलो ये खत्म हो गया, नेक्स्ट, ये खत्म हो गया, नेक्स्ट. राइट? कोहेरेंस ऑफ आइडिया, आपके आइडिया का कोहेरेंस मींस व्हाट इज मीन बाय कोहेरेंस, आपने वो ग्रास्पिंग कितना अच्छा किया है उस आइडिया को. राइट? एंड देन ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल. अंडरस्टैंड? लीडरशिप में क्या आता है? यू शुड टेक इनिशिएटिव, यू शुड हैव दैट टीम स्पिरिट. देन फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल हमने देखा. डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए. एंड फाइनली यू शुड हैव पेशेंस टू लिसन अदर्स. You should have patience to form the group discussion in a particular scale and then take the group discussion always to the next level. Understand? So negative points क्या हो सकते हैं आप में? knowledge के बारे में, lack of subject knowledge, कुछ भी बतिया रहे हो, बस आ गया टॉपिक सामने, वो आ गया टॉपिक आपके सामने, इंडिया के डेवलपमेंट का, आप बता कुछ अलग ही रहे हो. राइट? लैक ऑफ मेटिकुलसनेस. लैक ऑफ मेटिकुलसनेस मतलब क्या? उस पर्टिकुलर आपको जो पॉइंट सामने है, वो पॉइंट छोड़ के आप कुछ भी बोल रहे हो. राइट? पुअर क्वालिटी ऑफ माइंड. क्वालिटी माइंड, आपके पॉइंट्स में उतनी क्वालिटी नहीं है आपके पॉइंट्स में, बस सब नॉर्मल जो बोलते हो, इंटरनेट पे जो देखा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो देखा, वो वही बोल रहे हो आप. दैट शुड नॉट हैपन. राइट? लैक ऑफ क्रिएटिव आइडिया. देखो, क्रिएटिव आइडिया ना, इट इज समथिंग आई विल टेल यू. यू शुड बी एबल टू ब्लेंड डिफरेंट आइडियाज. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू, एनी टॉपिक कैन बी डिवाइडेड इनटू सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट. सो अगर आप किसी भी टॉपिक को प्रॉपरली सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंट एस्पेक्ट में ले आते हो ना, दैट इज समथिंग क्रिएटिविटी. राइट? आई विल टेल यू द एग्जांपल. आप लेक्चर होने के बाद इसके बारे में मुझे पूछो कि सर हाउ कैन वी मेक एनी पर्टिकुलर टॉपिक इन दिस 3 कैटेगरीज. लैक ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉपरली एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो आप, कुछ भी गलत डेटा देना है, दे रहे हो आप, दिस शुड नॉट हैपन. राइट? नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी. निगेटिविटी में कैसे जाएगी? इंट्रोवर्जन, स्लोनेस, अपने आप में ही घुट रहे हो आप, बहुत स्लो बात कर रहे हो. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ही नहीं है बंदे में, पॉइंट है बट कॉन्फिडेंस नहीं है. इट शुड नॉट हैपन. एप्रीहेंशन, टेंसनेस, चेहरे पे ऐसा टेंशन है, ऐसा लाइक
कोई वॉर पे जा रहे हो आप, ये नहीं दिखना चाहिए, राइट। इम्पोलाइटनेस, सामने वाले को भी बात करने दो, खुद भी अच्छे से बात करो। एक रिस्पेक्ट, एक तहजीब होनी चाहिए आपके बातों में, अंडरस्टैंड। एपैथी, अनरिस्पॉन्सिवनेस एंड बोर्डम, राइट। सामने वाले का सुनना ही नहीं है, और सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करना है, ओके। ऐसे एटीट्यूड से नहीं चलेगा, अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन स्किल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, व्हाट शुड नॉट देयर बी इन कम्युनिकेशन स्किल? फम्बलिंग, व्हाट आई वांटेड टू से हियर इज, या फिर म्यूटनेस, कुछ भी बात नहीं कर रहे हो, या यू आर राइट, you are also absolutely right. Yes, chase number 5, you are also right. Everybody is right except me because I am not going to talk anything, understand? This should not happen. Confused and unclear, बात सीधी सीधी बात कर दो ना यार, हर वक्त क्यों अनक्लियर रहते हो, राइट। मेंडरिंग, घुमा रहे हो, बस टॉपिक को घुमा रहे हो आप, राइट। इनकोहरेंस, टॉपिक को समझ ही नहीं ले पा रहे हो आप, बस कुछ भी बात कर रहे हो, ओके। एंड मोनोटोनी, मोनोटोनी मतलब क्या, सिर्फ खुद के बारे, खुद ही बात करना, किसी को बात ही नहीं करने देना, ओके। दीज आर द नेगेटिव ट्रेट्स यू शुड नॉट हैव। एंड लीडरशिप स्किल में क्या नेगेटिव कर पाते हो आप? आइसोलेटेड, इंसुलेटेड, सबसे दूर रहोगे, भाई मैं मेरा पॉइंट बोल दूंगा, बाकी तुम करना है वो करो, राइट। एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना, इनिशिएटिव, हमने पिछले स्लाइड में देखा है, राइट। अनअप्रोचेबल, आपसे कोई बात ही नहीं कर पा रहा है, आप जो कुछ भी, जो कोई कैंडिडेट आपके बारे, आपके पॉइंट को काट रहा है, राइट, आप उसको बात ही नहीं कर दे रहे हो, राइट। दिस शुड, ये नहीं होना चाहिए ना। इगोइस्टिक एंड एग्रेसिव, ये तो बहुत गलत बात है। मेरा ही सिर्फ जो है वो मेरा है, बाकी किसी का नहीं है, ऐसा नहीं चलता है, ओके। यू शुड बी इन द ग्रुप। वीक, वेविंग, राइट, सुन रहे हो, खुद को डोमिनेट, खुद को एस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहे हो। एंड ऑफ कोर्स इम्पेशेंट, ये जो पेशेंस वाली चीज है ना, ये लाइफ में और एसएसबी में बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप इम्पेशेंट दिख गए एसएसबी एसेसर को, तो ये क्वालिटी ही ऑफिसर की है। यू शुड हैव, आपको बहुत ज्यादा पेशेंस होनी चाहिए हर चीजों में, अंडरस्टैंड। चलो, सो व्हाट टू डू इन द ग्रुप डिस्कशन। सो फार आपको समझ गया, चलो मुझे रिस्पॉन्स दे दो सो दैट वी कैन मूव अहेड। चलो, सो फार समझ गया, सो फार कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो हाथ ऊपर करो, सो फार। नो सर, तेजवीर को तो नहीं है दिक्कत, ओके। ओके, आज रितेश नहीं आया, ओके। चलो फाइन। चलो, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर द ग्रुप डिस्कशन। चलो, ग्रुप डिस्कशन में क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कंसिडर योरसेल्फ एज ग्रुप लीडर एंड रेस्ट विल फॉलो। मैंने ये चीज आपको बोली थी कब? चलो, ये चीज हमने कब डिस्कस की थी, चलो बोलो, ये कब डिस्कस हुआ था? जल्दी चैट सेक्शन में जल्दी बोलो, ये पॉइंट कब डिस्कस हुआ था? पीपीडीटी, वेरी गुड अजय। This point was discussed in the PPDT. We have discussed this in the PPDT, right? ये वाली चीज कर दोगे ना, खुद को ग्रुप लीडर समझना स्टार्ट कर दोगे ना, यस प्रभात, यस, तो आपका पूरा एसएसबी, खास करके जीटीओ निकल जाएगा, राइट। सिट स्ट्रेट एंड कॉन्फिडेंट, चलो जहां पे बैठे हो सब सीधा बैठो, चलो सिट स्ट्रेट एंड कॉन्फिडेंट, हैव एन ओपन एंड फर्म बॉडी लैंग्वेज, बी काम एंड रिलैक्स, ओके। रिलैक्स में बात करो, काम रहो, कंपोज रहो, स्ट्रेट एंड कॉन्फिडेंट रहो, राइट। मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट विद एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप, सब लोगों से बात करोगे प्रॉपरली आई कॉन्टैक्ट करके। हैव अ स्माइल अराउंड योर फेस, चलो हंसो एवरीवन, चलो अच्छे से स्माइल रखो चेहरे पे, यू शुड हैव दैट स्माइल अराउंड योर फेस, राइट। हंसते रहना चाहिए एवरी टाइम। हैव सेंस ऑफ गिवन टाइम, टाइम इज अ क्रूशियल phenomenon in the group discussion. Given infinite time, everybody can speak on any topic, but when time is limited, it calls for one's presence of mind, mental alertness, and ability to apply knowledge within the stipulated time. आपको टाइम का बाउंड होना चाहिए। यू शुड नो कि यार बस 15 मिनट है मेरे पास, एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन करवाना है, करना है, मुझे भी मेरे पॉइंट्स देने हैं, सो दैट आप हर मोमेंट को काउंट करोगे। क्या है ना, अगर मैं आपको 2 घंटे दे दूं, चलो बात करो किसी टॉपिक पे, एवरीबडी कैन स्पीक, बहुत ज्यादा एक से एक पॉइंट आएगी, राइट। बट not in the SSB. Time is very limited, 15 to 20 minutes, and you have to, speak very properly in the group discussion. Understand? Next is, ये थोड़े पॉइंट बहुत बड़े हैं, ओके।
आई वॉज टुडे थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से पीपीटीज थोड़े अच्छे नहीं बने. प्लीज कंसिडर फॉर टुडे. Initiate GD. Try to speak as early as possible and be amongst the first three speakers. If you are a person with good content, you will surely be among the initial speaker. A natural leader is somebody who will emerge in a chaotic environment. So what you have to do is try करो group को try करो GD को initiate करना. Okay, and initiate you will do initiating like this. So gentlemen, we have very good topic in front of us, that what are the necessity of the development of India, whether it is the technology, whether it is the education, or whether it is the economics. So here we have to discuss different aspects of the development of our country: economical aspects, educational aspects, and technological aspects. So we will do the group discussion very cheerfully. In my opinion, economical aspect is very important in order to grow any country, because and you start your discussion, right? So you should have the good content. और अगर आपको टॉपिक समझ गया है ना, तो इनिशिएट करना इजी जाएगा. ओके, दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू इनिशिएटिव, ओके, पहले तो पूरा के पूरा जीडी को प्रॉपरली समेटो. गिव द प्रॉपर frame for the discussion, like we are going to discuss this, we are going to discuss that, and then start with your point, and that rest group will follow the same frame, believe me. Okay, speak clearly without hesitation. Express your points in firm but polite voice, and be confident and assertive. हमने ये देखा है. Okay, once you have spoken point in your mind sufficiently, then give chance to other candidates who want to speak but haven't spoken. Be a good listener too. GD is also about cooperation, and it is not only leadership qualities that will be checked in the group discussion, but also one's ability to work in the team. One cannot be a leader all time. One has to be follower also. In fact, one should be a follower first before becoming a leader. तो इसका मतलब क्या है? पहले आपके पॉइंट सफिशिएंटली बोल दो. ओके, देन जिसको बोलना है उसको चांस दो. ओके, बी अ गुड लिसनर एंड देन बी अ गुड स्पीकर. दोनों होने चाहिए आपके अंदर, दोनों पॉइंट्स होने चाहिए. अंडरस्टैंड? चलो, लिसन टू अदर ग्रुप मेंबर्स अटेंटिवली. ओके, काफी बार ये चीज बहुत काम में आ जाती है. किसी एक कैंडिडेट ने एक आइडिया दे दी, सपोज किसी ने आइडिया दे दी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो आप क्रिप्टो करेंसी, उसने पॉइंट तो डाल दिया, पर क्रिप्टो करेंसी के शायद आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मालूम होंगे, तो वो आप उसी पॉइंट को पकड़ के बाद में कहीं ना कहीं उसको यूज करके पॉइंट दे सकते हो. दैट्स व्हाई collecting the points from other candidate is a very smart move. That's why be very attentive in the group discussion. Give them positive response, properly nodding करके response करो सबको. Show active listening skill. Understand that group discussion is essential about group. It's everything about group, not individual. Hence, discussion. Hence, in group discussion, an individual cannot choose to have a discussion with his known friend or somebody who he likes to talk to. Understand? In fact, group discussion tests how one can push oneself out of the comfort zone and talk to strangers and win over them with logical and persuasive argument. A candidate, however self-centered might be, should never ignore the fact that the other participants who are equally interested in sharing their views. So yes, आप समझ लो साहब कि ये group discussion. You should be with the group. आपको ग्रुप के साथ रहना पड़ेगा. Okay? That's why ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही है कि अन्य लोगों के साथ आओगे, खुद के पॉइंट बोलोगे और सबको इंप्रेस करोगे. You should be able to influence the group. Understand? And that is why be very attentive and consider this as a group discussion always. Understand? Chalo, next is be logical. Be specific about the topic. Be on track throughout the discussion. Back your points with fact, figures, and logic, and keep the topic on track, and don't be irrelevant. Be brief as well as precise. ये चलो, मुझे कोई भी पूछ लेगा कि सर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10 मिनट्स. ओके, आफ्टर दिस फिर से ज्वाइन कर दीजिए. ओके, अगर आप मुझे पूछोगे कि सर ग्रुप डिस्कशन में कैसे जीतूं, ओके, मैं एक ही पॉइंट बोलूंगा. आपके पास जबरदस्त कंटेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और आपके पॉइंट में इतना वजन होना चाहिए. योर पॉइंट शुड बी सो लॉजिकल. योर पॉइंट शुड बी जिसका फैक्ट, फिगर, लॉजिक और रिलेवेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका पॉइंट नेक्स्ट टाइम जब आप पॉइंट बोलोगे, सामने वालों को सुनना ही पड़ेगा. डू यू नो, आपके लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड होगा या फिर होगी
that जो जब कभी भी बात करता है या करती है ना, वो लॉजिकली बोलते. डू यू हैव दैट फ्रेंड? किसी के, चलो चैट बॉक्स में बोल दो, डू यू हैव एनी सच फ्रेंड्स? कि सर वो बात करना शुरू कर दिया तो लॉजिक ही बोलेगा, वो बात करना शुरू कर दिया तो वो फैक्ट एंड फिगर ही बोलेगा. डू यू हैव दैट फ्रेंड? चलो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो एवरीवन. और आप उसका ऑब्जर्व करो. You observe that, understand, you observe that whenever that our friend speaks, the person who have very good logic, we tend to listen it. Okay, we tend to listen him, we tend to listen her, right? और यही होता है moral pressure, and this is the moral pressure. Okay, this is how you build your influence in the group. How? Giving the logical and the most relevant point about the particular topic. You getting my point? That's why having, chalo, if you don't have the other skills now, it's okay, thoda bahut chal jayega, but you should have this thing, logical, specific topic throughout the discussion, backing the points with fact, figures and logics. So next is contribute in the group qualitatively. Qualitatively contribute, do contribution qualitatively rather than quantitatively. It doesn't matter you how many times you spoke in the group discussion. What matters is how qualitatively you gave your point, even one or 2 points, how qualitatively you gave your point, how relevant and logical the point was, and because of that point, did the discussion move further, had the discussion move further. That is what is checked in the group discussion. Contribute with relevant point, utilize your knowledge, contribute vigorously, fully and steadily. I hope I don't have to explain this again. Use simple and easy language. Avoid grammatical errors. Frame whatever you want to speak prior to your mind. See, yahan pe thoda, we will stop a bit here. Very simple. Use very simple language. You are not here to, we are not Shashi Tharoor. Huh? Avoid grammatical errors. Okay. Frame your sentences prior before mind, and whatever your speed will be, talk in that speed. Okay. Generally, what we think that our speed is very fast or very slow as compared to others, but it is not the thing. You should have, see, what is the speed of speaking of any person? It is nothing but the speed of thinking and speed of decision that I am going to say this word, right? So your practice should be forming the sentence prior in your mind and giving in the time, understand, and that is your speed of speaking. So a well-framed sentence always influences the group. The language of GD is English, but if you get stuck somewhere, you can speak in Hindi here, not English, but try to come back to English as soon as possible. Use parliamentary language. Don't use abusive language. Don't use hey buddy, gentleman, hey buddy, hey boy. No, don't use such language. Be very parliamentary and thorough gentleman throughout the discussion. Disagree politely. If you don't agree with anyone, disagree politely. And when situation demands, interfere forcefully but politely. What is the meaning of this situation demands? Suppose if a candidate is continuously speaking, okay, and his relevant point are finished and he just, utilizing the chance because just he got the chance. So politely interrupt him, like chess number 4, yes, we got your point, so let's take this discussion to the next level. What I think is, and then you are speaking, right? Disagree politely. And when situation demands, mean what? If one candidate is continuously speaking irrelevant and illogical, all right, and then if you want to initiate the GD, which we have spoken earlier, make sure you have a reasonable knowledge about the subject and cover the broader aspect in initiative. As I said, for example, if the topic is who caused the COVID-19 disaster, if GD topic comes, government, people, or you will say the virus, you will say the finance itself, your government, people, or the severity of virus. So when you will initiate the GD, you will simply say that, you will simply give the background about the topics. So as we have a very interesting topic about the COVID-19 situation, and this pandemic is affecting economy as well as the society, and that's why the discussion is very necessary. So
we are going to discuss that did really go because of government this pandemic spread because government has a lot of responsibility of healthcare of people, or people itself are the responsible for the COVID-19 pandemic because in India people are not aware about the health issues, or does this virus is really that effective that both the people and the government cannot handle it. So this is very interesting topic and we will start with the discussion. This is what you should speak when you are initiating the GD. Okay, so allow other candidates to speak, avoid interrupting other speakers and give others chance to speak. And ये बहुत important है. Most of you will ask me the question, sir, what shall we do in the chaotic situation? Understand? So in the chaotic situation, when कोई किसी की नहीं सुनता, what you will do? Natural leader exhibit all leadership traits and good coordinating abilities. In the situation like fish market, in which the real leader negotiates, resolve conflict and coordinates and cooperated to bring the peace to the whole group, means what you are going to do is calm down everyone. Let's chess number 3, 4, 8, 9. We are just please calm down. We are losing the track of the discussion. Please remain silence. And unless and until group doesn't get silence, you speak continuously to get group silence. And this is how you handle the chaotic situation. Make the group silent and then again start the discussion. Understand? The effort should be seen in such a manner that this particular person is doing his best to do the group discussion and he is thinking about the group, not only about himself or herself. Understand? This point is very necessary as far as the chaotic situation is considered. So what are the don'ts in group discussion? So we will discuss don'ts in the next session immediately. Please rejoin in the session. I will end the meeting for now and फिर से join करेंगे and we will finish this. Okay? चलो, I will see you within a minute.